Hello, good morning, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. So, today we will discuss the guest paper of psychology for BG third semester. This paper is major as well as minor paper. This paper is framed by one of the experts in this very subject. So, before discussing the guest paper, once again, I request all of you kindly share as well as subscribe this channel. इस पेपर में ज़्यादातर थ्योरीज़ है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बोलने में कुछ दुश्वारी भी हो सकती है, क्योंकि दिस नॉट माय पर्सनल सब्जेक्ट। सो आप वो देख लीजिएगा। मैं हाईलाइट करूँगा जहाँ जहाँ भी जो भी थ्योरी है उनके जिन्होंने वो थ्योरी दी है तो उनके नेम थोड़ा बहुत टिपिकल है, तो आप देख लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज एरिस्टोटल थ्योरी थ्योरीज रिगार्डिंग सोल एंड माइंड। ठीक है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन विल बी थॉमस एक्विन्यूज contributions regarding theology on psychology during the Middle Ages. Second question. Third question is dualistic view of mind and body proposed by Descartes during the Renaissance. Fourth question is summarize the contributions of Martin Seligman to the field of positive psychology and its focus on well-being and human flourishing. ठीक है. Coming to fifth question, we have David Bursis studies on evolutionary psychology and their similarity to understanding human mating strategies. Sixth question is explain socio-cultural theory of cognitive development by Vygotsky and its implications for understanding human cognition. Seventh question is what are biological and neuroscience approaches to psychology with emphasis to Eric Kandel's research on memory. ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है. नाउ कमिंग टू एट्थ क्वेश्चन, वी हैव डिस्कस एल्बर्ट बेंडोर्स सोशल लर्निंग थ्योरी एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू कॉग्निटिव एंड बिहेवियर अप्रोच. ये आपको देख लीजिएगा यहाँ क्या है. नाइन्थ क्वेश्चन इज इलॉबरेट ऑन Abraham Maslow's hierarchy of needs theory and its impact on humanistic psychology. ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा क्या है. टेंथ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द की कंसेप्ट्स ऑफ फ्रेंडलियन psychoanalysis including unconscious mind and psychosexual development. 11th question is explain Skinner's studies on operant conditioning and their implications for behavioral modification. ठीक है. And last question is explain the concept of functional consciousness as proposed by William James. So this was all about the guest paper of psychology for BG third semester. Hopefully you will get enough marks from this very guest. Thank you for your cooperation.